गोवा। ये नाम सुनते ही जहन में आता है सन किस्ड बीचेस, वाइब्रेंट नाइट लाइफ, लाइवली कल्चर, एक्सप्लोरिंग गोवा की गलियां ऑन अ रेंटेड स्कूटर और स्कूटी। पर क्या आपने किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो गोवा जाकर भी सिर्फ होटल के अंदर ही रहा हो और कभी बाहर नहीं गया? Well, that person is me. Hello and namaste. Welcome to Dim's Travel Diaries. When I went to Goa, I didn't feel like going outside, so I stayed in the hotel and explored the activities that hotel had to offer. And trust me, I wasn't bored. I had fun and nice quiet me time. Sometimes you need these kind of holidays. What do you think? Let me know. One of my friends even made fun of me that I had only posted pictures inside of hotel for 4 days. Well, what can I say? That's me. I stayed at this beautiful superior suite at Grand Hyatt. और जब आप यहाँ रहते हैं तो आपको एक पर्सनल बटलर भी असाइन होता है। मेरी पर्सनल बटलर थी सपना। Sapna was an amazing host. I enjoyed with her very much. Thank you, Sapna. The rest of the hotel staff was also amazing. पहला सनसेट व्यू गोवा आने के बाद। I love every day watching sunset along with a glass of nice wine. It was beautiful. ये होटल का बीच है जो इनफैक्ट मुझे उतना पसंद नहीं आया. I don't consider this as a beach, but rest everything was fine. There are so many beautiful spots, Instagram worthy I would say, to get your photographs clicked all around the hotel. Next day I went for a sundowner with dining set up 160 feet high above the ground with beautiful 360-degree views. So basically आपको क्रेन से हवा में लटका दिया जाता है और आप स्नैक्स और बॉलीवुड सॉन्ग्स एंजॉय करते हुए सनसेट व्यूज एंजॉय करते हो. So अगर आप एडवेंचरस हो और अगर आपको हाइट से डर नहीं लगता, then this activity is for you.
Sunset के बाद शाम को with so many lights around, hotel looks even more beautiful. This was my favorite place to spend my evenings. The magical lights, the crackling bonfire, the mellow music made the ambience perfect for me to chill and relax. मॉर्निंग अराउंड 8:30 जब सब सो रहे थे या फिर वो रेस्टोरेंट में बुफे ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे, आई डिसाइडेड टू गो फॉर फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट. सो देयर वाज नोबडी अराउंड, इट वाज जस्ट मी एंड शेफ. आई एंजॉयड माय क्वाइट ब्रेकफास्ट इन द पूल. शेफ वाज काइंड एनफ टू होल्ड द कैमरा फॉर मी. बट अगर आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, आई गेस यू विल एंजॉय इट इवन मोर. इसके बाद दिन में ऐसे ही घूमते घुमाते ऑन द ग्राउंड्स आई सॉ दिस सेगवे राइड. तो पता लगा दिस वाज द फर्स्ट डे टू इंट्रोड्यूस दिस एक्टिविटी इन द होटल. तो फिर क्या था, मैं पहली कस्टमर बन गई और बहुत स्पीड से इधर उधर चलाया. इवन ही वाज सेइंग मैम प्लीज स्लो डाउन. और फिर हीरोगिरी के चक्कर में एक ऊप्स मोमेंट, I lost my balance, but ज़्यादा कुछ नहीं हुआ. I managed it. My favorite activity in this hotel was sailing. So Aqua Sails का ऑफिस है गोवा में इस होटल में, और इसी होटल से वो लोग ऑपरेट करते हैं. They even provide you a short certification. उन्होंने मुझे भी बहुत कोशिश की कन्विंस करने के लिए, पर उसके लिए आपको 3 या 4 दिन कंटिन्यूस सेलिंग करना पड़ता है. So I opted to go for day packages for 2 continuous day. और उसमें वो आपको 2-3 तरह की अलग अलग बोट में they let you ride. So the first day हमने फन बोट लिया, फिर एक और बोट था जिसका मुझे नाम याद नहीं है, और फिर हमने kayaking की. Captain Evans was there with us for the first day. बहुत मज़ा आया. He is actually based out of Mumbai. कभी कभी वो गोवा आते हैं. But it was so much fun. Second day फिर हम पहुंच गए जिसमें हमने कैटामरान और फन बोट दोबारा से किया. And I think we ended up doing kayaking again. But it's a must-do activity if you are in Goa, whether you are staying in Hyatt or not staying in Hyatt, you should do it. They also have a small zip line, sky cycling, archery, mainly for kids. There is a casino within the premises, Big Daddy Casino.
They also have a great spa with indoor swimming pool. Inside the main building, there is a small galleria with some nice boutique shops just in case you wish to buy something. I always do. If you like the video, please do like and subscribe to my channel. Cheers, bye, thank you.